Good morning, students. According to cell, the unit of life, we will study about today. We will study about Golgi complex or Golgi bodies, in short GB. Okay. Golgi complex is found in all eukaryotic cells except RBCs. Italian scientist named Camillo Golgi discovered in it 1898 from nerve cells of cat. So this organelle is named after its discover Golgi. In the higher plants, they remain scattered in the cytoplasm and are named as dictyosomes, but in animal cells they are localized. Okay. गोल्जी बॉडीज़ जो है वो कैमिलियो गोल्गिस के द्वारा डिस्कवर किया गया था, इसीलिए इनका नाम जो है वो गोल्जीस रखा गया। गोल्जी कैमिलियो गोल्जी का सरनेम के उस पर। और ये जो है वो यूकैरियोटिक सेल्स में मैक्सिमम सेल्स में पाया जाता है एक्सेप्ट आरबीसीएस में को छोड़कर। ओके। प्लांट में भी ये पाया जाता है, बट ये प्लांट में डिक्टियोसोम्स के नाम से जाना जाता है। एंड in an animal cell 3 to 7 and in plant cell 10 to 12 Golgi complex are found, but in some lower animal cells only one Golgi body is found, and it is also called as Lysochondria, Lysosomes, Dalton complex and Golgi apparatus, etc. And when we talk about its distribution, Golgi complex is found in the cell of higher plants and animals. These are well developed in secretory young and active cells. Okay. And Golgi body is not found in prokaryotic cells. हमने पहले भी पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल मेम्ब्रेन से बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स absent होते हैं. So Golgi body is also absent in prokaryotic cells. And when we talk about its origin, it is believed that Golgi body originated from endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulums के बारे में हमने अपने इसके पहले के लेक्चर में पढ़ा था. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स का जो भाग होता है, संभाग जो है टूट जाता है और वही Golgi बॉडीज़ का स्ट्रक्चर बनाता है. सो Golgi बॉडीज आर डबल मेम्ब्रेनस यूनिट. Electron microscopic study of it shows three distinct components are as follows. First is cisternae, like this. Okay, these are elongated tubular or flattened sacs filled with fluid, and each Golgi body is composed of 4 to 7 cisternae held in parallel bundles. Each cisternae of Golgi is formed of two membranes continuous at the two end, enclosing a thin space of about 520 angstrom, and the thickness of the membrane is about 60 angstrom. चूँकि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये भी बैग लाइक स्ट्रक्चर ही होता है जो आपस में जुड़ा हुआ होता है. तो इसका टूटा हुआ भाग है, इसमें भी जो ये बैग लाइक चपटे चपटे बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर अरेंज्ड रहते हैं, एंड इट इज़ कॉल्ड सिस्टर्नी. ओके. एंड सेकंड स्ट्रक्चर इज वेसिकल्स. वेसिकल्स ऑकर एट द पेरीफेरी आर bulbous outgrowth meant for storing secretory material, and their diameter is 60 micron. And third structure is vacuoles. These are large spacious rounded sac like structure found at the edges of Golgi complex. Golgi complex का भी जो ये सिस्टर्नी जो होता है थैली लाइक स्ट्रक्चर, वो भी टूटते रहता है और अलग होते रहता है. यही जो है वो वैक्यूल्स बनाता है. एंड दीज वैक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय द वेसिकुलेशन ऑफ द फ्लैटेंड सेक्स ऑफ सिस्टर्न. ये छोटे छोटे बैग लाइक स्ट्रक्चर, जैसे गुब्बारे को तोड़कर हम छोटे छोटे बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जस्ट वैसे ही. ओके. देन व्हेन वी टॉक अबाउट फंक्शन ऑफ Golgi कॉम्प्लेक्स, तो जैसे कि यहाँ पर हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखा था, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही टूटा हुआ हिस्सा Golgi कॉम्प्लेक्स होता है, Golgi बॉडीज होता है. सो इसका वर्क जो है वो दोनों में काफ़ी सिमिलरिटीज़ होती है. द मेन फंक्शन ऑफ Golgi बॉडी इज सिक्रेशन. ये चीज़ों को
बनाता है और सिक्रेट करता है. एंड सिक्रेटरी वेसिकल्स मूव टूवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ब्रस्ट ऑन द सेल सरफेस रिलीजिंग देयर कंटेंट्स. इसमें छोटे छोटे वेसिकल्स बनते हैं, वैक्यूल्स बनते हैं, ये जो है पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रोटेट होते हैं और जहाँ पर भी इसमें बनने वाले सिक्रेशन का नीड होता है वो वहाँ पर ब्रस्ट हो जाते हैं. एंड लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम गोल्जी बॉडीज़. इसका जो छोटे छोटे टूटा हुआ हिस्सा होता है वही लाइसोसोम बनाता है. व्हाट इज़ लाइसोसोम, ये हम पढ़ेंगे. इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स. ये कार्बोहाइड्रेट्स कॉम्प्लेक्स को सिंथेसिस करने में भी ये हेल्प करता है. एंड समटाइम्स गोल्जी बॉडी सीक्रेट carbohydrates which help in the formation of the cell wall in plants. Okay, and it helps in the formation of acrosomes of sperm and matrix of cartilage, and it is also help in cell plate formation. तो यहाँ पर हमने अभी पढ़ा कि इसका जो टूटा हुआ वैक्यूल्स होता है वो अलग होकर लाइसोसोम का फॉर्मेशन करते हैं. देन वी टॉक अबाउट लाइसोसोम. लाइसोसोम, लाइसिस मीन्स डाइजेस्टिव एंड सोमा मीन्स बॉडी. ऐसी बॉडी जो डाइजेस्ट करती है. सो लाइसोसोम्स आर स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म विच परफॉर्म इंट्रासेलुलर डाइजेशन ऑफ द सेल. सेल के अंदर के जो वेस्टेज मटेरियल होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर जो वेस्टेज मटेरियल होता है, लाइक बाहर से अटैक करने वाले बैक्टीरियास वगैरह हैं, या सेल ऑर्गेनल्स का जो डेड हो गया है, सेल ऑर्गेनल्स जो वर्क करना बंद हो गया, तो ऐसे सब्सटेंस को लाइसोसोम जो है वो डाइजेस्ट कर देते हैं. एंड डीडुए 1955 हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम फॉर द फर्स्ट टाइम एंड नेम्ड देम एज lysosome. They are electron microscopic vesicles structure and of the cytoplasm which are involved in intracellular digestive activities, so called lysosomes. ये कहाँ पाया जाता है? Lysosomes are present in all animal cells and in a few plant cells like fungi, yeast, neurospora, protist, euglena, etc. And animal cells which are secretory in functions like liver cells, spleen cells, pancreatic cells, kidney cells and thyroid cells contain large number of lysosomes. जहाँ जहाँ भी वेस्ट मटेरियल का डाइजेशन होना है या उसको बॉडी से अलग करने का वर्क होता है बॉडी में, वहाँ पर लाइसोसोम जो है वो ज़्यादा पाए जाते हैं. एंड thyroid cells contain large number of lysosomes and lysosomes are found in the meristematic cells of plant. प्लांट में ओनली ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स में होते हैं, अदरवाइज़ ये प्लांट में ज़्यादा मात्रा में ये नहीं पाए जाते हैं. एंड ओरिजिन की बात करें तो अभी हमने बताया था कि ये जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना, और गोल्जी बॉडीज़ के जो सरफेस है उसके छोटे छोटे बैग लाइक स्ट्रक्चर, सेक्स लाइक स्ट्रक्चर जो है वो इससे कटते जाते हैं और ये लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है. एंड लाइसोसोम आर स्फेरिकल टीनी बैग फिल्ड विथ useless material and digestive enzymes and bonded by a single unit membrane. And enzymes of lysosomes, about it is a lysosome. Different shapes of lysosomes are found in different cells. Okay, and enzymes of lysosomes, about 40 enzymes have been recorded in lysosomes. All the enzymes do not occur in the same lysosome, but there are different sets of enzymes in different lysosomes. And the important enzymes are acid, phosphate, sulfate, protease, nuclease, lipase and glycosidase. And these enzymes are also called acid hydrolases because these enzymes usually function in acidic medium of pH less than 7. And lysosomes are called suicidal bags because of the presence of large number of digestive enzymes or acid hydrolysis in them. Okay,
लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एसिडिक एंजाइम्स होते हैं। एंड अगर सेल के अंदर इनको खाने के लिए इनका डाइजेस्टिव एंजाइम्स इतना ज़्यादा एक्टिव होते हैं कि अगर सेल ऑर्गेनल्स या अदर सब्सटेंस इनको सेल के अंदर नहीं मिलता है तो कभी कभी ये जो यूज़फुल सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उसको ही खा जाते हैं, उनका ही डाइजेशन कर देते हैं। सो इट इज़ कॉल्ड सुसाइडल बैग। अब इससे क्या होता है कि धीरे धीरे सेल ऑर्गेनल्स मरते चले जाते हैं और सेल जो है वो डेड हो जाता है ना। सो इट इज़ कॉल्ड अ सुसाइडल बैग। Only a thin membrane separated the digestive enzymes from the rest of the cell, and if the membrane happens to broken, the various cellular constituents would undergo lysis. Okay, and then we will talk about vacuoles. What is vacuoles? Presence of vacuoles in the features of plant cells. These are mostly absent but sometimes may be found in animal cells also. Okay, ये जो है वो प्लांट सेल्स में ज़्यादातर तो प्लांट सेल्स में होता है, एनिमल सेल्स में नहीं होता, बट कभी कभी होता भी है, बट ये बहुत ही छोटा या टिनी साइज का होता है। हावेवर वैक्यूल्स इन एनिमल सेल्स आर स्मॉलर इन साइज। ओके, एंड इन यंग प्लांट सेल्स वैक्यूल्स आर आल्सो स्मॉल साइज, बट एज द सेल मैच्योर many vacuoles fuse to form one or a few large vacuoles like this. Each vacuole is surrounded by a thin membrane called tonoplast. इसका जो membrane है वो tonoplast कहलाता है। and it is filled with cell sap. इसके अंदर का जो liquid होता है वो cell sap कहलाता है। and it contains sugar, minerals, proteins, amino acids, esters, water soluble pigments and waste product. And some protozoan cells have contractile vacuoles. These helps in osmoregulation. osmoregulation मतलब ये प्लांट सेल्स की टर्जिडिटी को बनाए रखने के लिए ये हेल्प करता है। एंड इन मैनी साइनोफाइसियन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया gas filled pseudo vacuoles or gas vacuoles are found, and these provide buoyancy to cells. The tonoplast of vacuoles are semi permeable and enable the cell to concentrate and store nutrients and waste product, and it also facilitated rapid exchange of materials between the cytoplasm and adjoining fluids. Okay, and so the function of vacuoles is the storage of food material, being semi permeable in nature, and it helps in osmoregulation, and it provides mechanical support to the colloidal matrix of protoplasm, and it help in the excretion of various waste product, and the cell sap keep the cell turgidity. Okay, then we will talk about mitochondria. Mitochondria are filamentous or granular cytoplasmic organelles called powerhouse of the cell. Okay, it is called the powerhouse of the cell. Under light microscope, mitochondria are seen in the form of short thread like structure. Different shape and size of mitochondria are found in different cells, and generally it is found in thread like structure, and therefore they are named as mitochondria. Mito means thread and chondrion means particles or granules, and these are essential for aerobic respiration of eukaryotic cells. यूकैरियोटिक सेल्स का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाग है, एंड इट इज़ फाउंड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स. एंड माइटोकॉन्ड्रिया वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय कोइलेकर in 1880, and later Fleming 1882 and Altman 1890 have confirmed the presence of mitochondria. The term mitochondria was coined by Benda 1897. Okay.
And when we talk about distribution of mitochondria, mitochondria are uniformly distributed in the cytoplasm of all eukaryotic cells, and they are lacking in prokaryotic cells. Prokaryotic cells में ये absent होता है, नहीं होता है. But they may be localized to those particular sites which are engaged in the metabolic activity. And the number of mitochondria in a single cell varies depending upon the species and functional state of cells. जो सेल जितना ज़्यादा वर्क करेगा माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ पर उतना ज़्यादा होगा, जहाँ पर वर्क कम होता है माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ पर कम होता है, बिकॉज द माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ सेल्स. तो ये क्या करता है, सेल को पावर देता है, एनर्जी देता है, एटीपी के रूप में वर्क करने के लिए. And when we talk about shape and size, shape of mitochondria is variable. It may be spherical, cylindrical, tubular, filamentous, or granular. The shape of mitochondria may change depending upon the physiological condition of cells. Okay, and the average size of mitochondria is 1.5 micron to 7 micron is in length, and 0.5 micron to 1 micron in diameter. And when the structure of mitochondria, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अगर हम बात करें तो द माइटोकॉन्ड्रिया आर बाउंडेड बाय ए डबल मेम्ब्रेनस सेल. डबल मेम्ब्रेन, बाहर की ओर एक मेम्ब्रेन एंड अंदर की ओर. एंड इसमें जो कैविटी होती है वो भी इनर कैविटी एंड आउटर कैविटी. Okay, each membrane about 16 angstrom in thickness. Both the membrane are trilaminar in nature, made up of lipoproteins, and these membranes are separated by an intermembrane space called outer compartment. इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है वो क्या कहलाएगा, आउटर कंपार्टमेंट कहलाता है, और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो भाग है वो इनर कंपार्टमेंट होता है. एंड द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन फॉर्म कंटिन्यूस आउटर बाउंड्री ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. इट इज pitted. The pits are of 2.5 to 3 micron in diameters. The inner membrane is projected into the central space in the form of pits, and the inner membrane is projected into the of finger like projection or in spacing known as cristae or mitochondrial cristae. This increases the inner surface area. The inner membrane lines the innermost compartment, which is filled with the gel like matrix. Okay, and it contains protein soluble lipid, circular DNA molecules, ribosome 70S types का, and certain granules are found in here. And granules are prominent in the mitochondria of loose cells which are related with the transport of iron and water. Okay. And when we talk about mitochondrial functions, cisternae of mitochondria are similar to the mesosomes of prokaryotic, and membrane in both contains enzymes. DNA of mitochondria are free, circular, and covalently closed like bacteria. Okay. The function of mitochondria. The mitochondria perform most important functions like oxidation, dehydrogenation, and oxidative phosphorylation and respiratory chains of the cells. And the structure of mitochondria and enzymes system are fully adapted for their different functions. And mitochondria are actually respiratory center of the cells, where the carbohydrate and fats are completely oxidized into carbon dioxide and
H2O in the presence of oxygen, and enzyme related during this process is stored in mitochondria in the form of ATP energy. And the ATP energy is used in various vital activities. So mitochondria is called as powerhouse of the cell. ओके तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे एंड नेक्स्ट डे जो है उसका आगे का चैप्टर पढ़ेंगे. सो गुड बाय एंड टेक केयर.